बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं SDTV। 27वीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, जिसका लोगो इस दफ़ा, जिसका मोटो इस दफ़ा, थीम है फ्रॉम वल्नरेबिलिटी टू रिजिलियंस। तो क्लाइमेट के बारे में काफ़ी फोकस है इसके ऊपर। क्लाइमेट चेंज जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिस पे हमारे साथ मौजूद हैं आज मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज रोमीना खुर्शीद आलम। हम आपसे पूछेंगे जस्ट टू एज ए बेसिक प्रेमाइज, ये बताइए कि स्टार्ट ही हम इस कॉन्फ्रेंस से करते हैं, आप किस तरह इसको बिल्ट अप करना चाह रही हैं, जो लेसन हैं, टेक अवेज हैं, ताकि आने वाली कॉप के साथ इसको डवटेल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। वंस अगेन SDPI और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेशन का मैं समझती हूँ एक बहुत आला और ये इकदाम है, कदम है जो हम लोगों ने मिलके लिया है। जहाँ तक बात है इस एक्सपो की, बात है अपने की के कॉप तक लेके जाने की, देखिए जैसे आपने खुद ही शुरू में बताया कि हमारा जो थीम है वो वनरेबिलिटी से रेजिलियंस की तरफ है। हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि V20 कंट्रीज़ कितने वनरेबल हैं क्लाइमेट चेंज को, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, लेकिन एज ए रेजिलियंस नेशन हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, इस चीज़ का अमल, इस चीज़ का भी जो जानना है वो बहुत ज़रूरी है पूरी दुनिया के लिए। और फिर इसके साथ साथ मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रीजन वाइज हम कोलैबोरेट करें, हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन लें और एक्सेस, जो इजी एक्सेस टुवर्ड्स फंडिंग है, क्लाइमेट फंडिंग, उसकी तरफ जो है इन तमाम मुल्कों को कैसे जाना है। जहाँ तक बात है इस एक्सपो की, यहाँ पर देखिए जो गुफ्तगू है वो क्लाइमेट से रिलेटेड, बिकॉज अंडर सन, मैं समझती हूँ सूरज की रोशनी के नीचे, आसमान के साए तले तमाम तर चीज़ें जो हैं वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो आप एजुकेशन ले लें, किसी भी चीज़ को ले लें, दे आर वेरी मच कोलैबोरेटेड, जो हैं वो अटैच्ड है क्लाइमेट चेंज के साथ। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं स्कॉप की, तो स्कॉप में हमारा जो सब बहुत अहम, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं समझती हूँ जो स्ट्रांगली जिनके ऊपर पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा फोकस होगा वो जैसे क्लाइमेट फंडिंग, फाइनेंस जो है उसके ऊपर, लॉस एंड डैमेज का जो फंड प्लेज किया गया, उसकी सूरत हाल कहाँ तक पहुँची और वो क्यों अब तक जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने उसको, उसके ऊपर क्या इकदाम लिए हैं, एक्सेस ईजी जो है वो वनरेबल कंट्रीज़ के लिए किस तरह से हो सकता है। फिर उसके बाद क्लाइमेट डिप्लोमेसी जो है उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। फिर जेंडर इक्विटी, जो क्लाइमेट जेंडर इक्विटी है उसकी हम बात कर रहे हैं। क्लाइमेट जस्टिस जो है उसकी बात हो रही है। सो आई थिंक दिस कॉप इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और इस दफ़ा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें हमने इस जो कोलैबोरेशन है इस कॉन्फ्रेंस की और कॉप की, वो ये है कि लाइक एंगेजमेंट ऑफ ऑल द प्रोविंसेस, ऑल द स्टेक होल्डर्स। हम लोगों ने उनको शुरू दिन से एंगेज जो है वो किया, जिसको हम इस कॉन्फ्रेंस में भी देखते हैं, जिसमें कि कॉप सिमुलेशंस, जिनमें पहली दफ़ा जो बच्चे हैं उनको एंगेज किया है। सो आई थिंक इट इज़ दिस कॉन्फ्रेंस जो है, मैं तो इसको एक प्री कॉप समझती हूँ कि उसकी तैयारी है। बिल्कुल, फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड उर्दू एंड वुड बी सिटिंग in Baku there listening to you, what you are talking about and drawing out policy initiative. Let me ask you a question in English and you may answer it. What are the basic takeaways from this conference and what are the basic aims and goals you think are achievable during that COP29 and you are taking it? Those who are listening there should concentrate. What is that they should concentrate regarding the Pakistan, which you think that the understanding is not that clear? Just one example, the flood. The people have built their homes through their own pockets without the fund be coming through the funnel that's not that flowing. So what are the main 1, 2, 3 takeaways you think that they should listen to? Well, thank you very much once again, Tahir Sahab, for highlighting this in a way that for the international community you want me to talk about. Well, it's very hard to say that what could be 1, 2, 3 takeaways or points which you want me to highlight. I believe, I always say this, and once again I would really like to mention that we cannot mix apples with oranges. When I say this, it means that regional policies are very important. Regional solutions are very important. In this COP, I think we need to focus more, and Pakistan is very much focused on the climate diplomacy. We are trying to engage moreover with the Pakistan focus in the high-level roundtable dialogues, in which we are looking forward that how the vulnerable countries should sit and they should come up with a policy over there
easy access towards the funding. Because the developing countries and those vulnerable countries, we are not the polluters, we are not the reason, but we are suffering. So it is also a violation of the human rights as well. So we are looking forward to climate justice as well. And every time, like the countries, the developed countries, which are always, trying to put the regulations on these developing countries, although we are suffering from the restraints as well. As you know, in the 2022 flood disasters, Pakistan has suffered a loss. That loss which is financial, everybody goes through the financial losses. But what about that mental health losses? The traumas, the children who become, those children who have lost their parents, those women who lost their families, those husbands, those men who lost everyone. There is a huge loss. So, of course, that money cannot work in that, but we need to figure out, we need to think about seriously, because the way nature is becoming rebellious, that is a huge alarm for us. First of all, they should understand. Yes, the understanding, I think the understanding is very much there. They should not play the games for us. They should walk the talk. Yes, they should walk the talk, and yes, we are the vulnerable people, but at the same time, we are the resilience. As you've said so very well, you have said so that, the people, they have made their own homes. Houses they built without any support. Yes. The woman in our land, like from the rural area, they knew that everything has gone. But very next day, what she has done, she just she stood up, she gathered her all energy, she built a small stove with the soil to cook something for the children. So sending somebody in aid, listen, we don't want aid, we want the trade. We want our rights for the vulnerable countries. We want that things for the generations to come. Because you see, me, you, we all lived our lives. But what sort of a future we are giving to our coming generation? So I think this is the most important thing, that the people should understand from the developed countries that what is the need of the time. Yeah. Thank you very much. This was Romina Khurshid Alam, the Minister for Climate Change in Pakistan, and obviously on the margin of this 27th Sustainable Development Conference, she's very vocal and she has a message to the international community, and the message should reach there before she actually reached there in Baku. See you then.